Hello everyone. Today we will discuss numericals based on Coulomb's law. So in lecture 3 we have completed the theoretical part of Coulomb's law. And complete course also along it with limitation and vector forms of Coulomb's law. Okay, let's start the numerical. So our first question is two pellets each with a charge of 1 microcoulomb are located 3 cm apart from air. What is the electric force between them? Okay, suppose these are two pellets each having charge 1 microcoulomb and their separation r is equals to 3 cm in air. The medium present between two charge body, that is your air. Okay, so this is suppose a q1, this is q2. This is a very general numerical. So F is equals to formula Coulomb's constant Ke, or you may write small k q1 into q2 by r square. Yes, so Ke value 9 into 10 to the 9 in SI system. q1 that is 1 microcoulomb, that means 10 to the minus 6 coulomb in SI. q2 also 10 to the minus 6 coulomb divided by r square. R is 3 centimeter, that means 3 into 10 to the minus 2 meter, its whole square. Okay, so this will be 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12 divided by 9 into 10 to the power minus 4. Okay, so after solving this is equals to 10 Newton. So this is your answer as per the question number 1. Let's come to the question number 2. So same question, two pellets each with a charge of 1 microcoulomb are located 3 cm apart from each other in water. So it is from each other in water. So what is the electric force between them and dielectric constant of water? It is given 81. So same as previous, you may solve. So this is your q1 and this is your q2 and separation between them is r. So F is equals to, and the medium present between two charged body, that is your water, and dielectric constant capital K, or that is epsilon r. Epsilon r of water is 81. It is given. Okay, so what will be the answer? Same formula you may apply. F is equals to Ke q1 q2 by r square. Okay, but here what is the value of Coulomb's constant? 1 by 4 pi epsilon medium. So the formula will be 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r into q1 q2 by r square. So when you are going to solve this question, 1 by 4 pi epsilon naught, its value is 9 into 10 to the power 9 Newton divided by epsilon r, it is given 81 into q1 q2 10 to the minus 6 into 10 to the minus 6, because it is given 1 microcoulomb divided by r square. That means 3 centimeter means 3 into 10 to the minus 2 meter whole square. So already we have calculated the value of this part, that is equals to 10. So 10 by 81, this is your answer. 10 by 81 Newton is the answer of question number 2. I hope it is clear to all of you. Next come to question number 3. Okay, so 2 point charges repel each other with a force of 100 Newton. Okay, and one of the charge is increased by 10%, other charge is reduced by 10%. Okay, so as for the question, let's draw the diagram. This is suppose charge q1 and this is q2, separation is r. Yes, so F is equals to, in between them, Ke q1 q2 by r square, and it is given, it is equals to 100 Newton. Next, in the next part, it is given one of the charge is increased by 10%. That means q1 dash is equals to q1 plus 10% of q1. This is the meaning of one charge is increased by 10%. So q1 plus 10% means 10 by 100 into q1, that is equals to q1 plus, this is your
1 by 10, that is 0.1 q1. Okay, so the answer is 1.1 q1. This is the value of q1 dash. Again it is given another charge is reduced by 10%, that means q2 dash. So q2 minus 10% of q2, so it will be q2 minus 10 by 100 q2, that means q2 minus 0.1 q2. Yes, so this is 1 minus 0.1, that is 0.9 q2. So this is the value of q2 dash. So what the question is asking, the new force of repulsion at the same distance would be dash. So it is asking the new force of repulsion at the same distance would be dash. That means r remains same. Now as per the question, this is your q1 dash, this is q2 dash, but separation between them is r. So new force will become F dash is equals to Ke q1 dash q2 dash divided by r square. So that is Ke into q1 dash is 1.1 q1, then q2 0.9 q2 divided by r square. So it will become 1.1 into 0.9 Ke q1 q2 by r square. Yes, so this is 11 by 10, 9 by 10, and Ke q1 q2 by r square, it is given its value is 100 Newton. Yes, its value is 100 Newton into 100. So next 100 cancel out, 11 into 9, that is 99 Newton. So 99 Newton is the answer of the question number 3. I hope this type of question is clear to all of you. समस्त बुझ पाइल. ओके, सो वीडियो को पॉज करी बर्तमान तुम क्वेश्चन निजे लेख कॉपी रे एंड ट्राई टू सॉल्व विदाउट वाचिंग द आंसर. जो तुम ठीक से बुझी पाइल देन आंसर न देखी ताको सॉल्व करबे ट्राई करो. ओके, ए सीरीज रे भलो भलो क्वेश्चन हम सॉल्व करिया, डिफरेंट वेराइटी क्वेश्चन, सब वेराइटी क्वेश्चन हम सॉल्व करिया जिबा. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. जदि चैनल टी तुम हेल्पफुल हो देन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सांग मान सहित शेयर करो सो दैट से भी बेनिफिट्स पाइबे. ओके, सो ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. Okay, this is ground, and here a charge of 2 coulomb is there, and other particle having charge of 4 coulomb of mass, not if mass, of mass 2 kg is placed above the first charge. So first charge ऊपर आ गोटे चार्ज अच्छी. ओके, जार कि चार्ज है 4 coulomb and mass है 2 kg. Yes, so in air the medium between them is air. So at what distance will the charge lie in equilibrium? That means the distance separation between them से पचारुची यार टा केते हेले दीटा का चार्ज कौन है इक्विलिब्रियम रे रहिबे. सो या को केमती सॉल्व करा जाय टाइप रो क्वेश्चन देखो. बर्तन से कहू छै दीटा का चार्ज बर्तन कौन है इक्विलिब्रियम रे रहिबे. दैट मीन्स हम जे कौन चार्ज कथा चिंता करिया, सपोज 4 कूलम चार्ज कथा हम अज्यूम कली, दैट इज इन इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स ऑन इट इज 0. तापर को फोर्स पड़ुछ आ देखो तो गोटे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन 4 कूलम चार्ज ड्यू टू 2 कूलम चार्ज. एटा तुम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. आ तार वेट कुआडे पड़ो बोले तार वेट पड़ो हमरो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज वेट इज mg. सो आज 4 कूलम, आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 कूलम चार्ज is in equilibrium. 4 coulomb charge is in equilibrium, which implies Fe is equals to mg. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कास्ट इक्वल हो तार मैग्नीट्यूड mg रो मैग्नीट्यूड और वेट रो मैग्नीट्यूड से इक्वल है, देन बोथ विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो फार्मूला Ke into q1 into q2 by r square is equals to mg. ओके, सो बर्तमान आम पुट करिया वैल्यू 9 into 10 to the 9 q1 वैल्यू 4 कूलम
Okay, don't write the unit, into 2 coulomb divided by r square is equal to mass is 2 kg in SI unit. G value let's consider 10. Yes, so if you will solve this, it will be r square is equals to 36 into 10 to the power 8. So what is the value of r? R is equals to root over of 36 into 10 to the power 8, that is 6 into 10 to the power 4. All are in SI unit. The unit of r is meter. This is your right answer. Yes, so I hope question number 4 is clear to all of you. Now the solve करो, try करो solve करने पे. It is a best question, good question. Now we will solve question number 5. Okay, question number 4 भलो question थिला. Next जीवा हमें question number 5 solve करिया. Now देखो एई टाइप रो question तुमको बहुत important तुम पे guarantee एई टाइप रो question तोर 1 mark हो किंबा कोन 2 marks हिसाब रे question आसीबो. Okay, so what is the aim of this question? Now see, two particles A and B having charges 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. अच्छा, both charges are given. This is your A, this is your B, and its charge is 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. Another one is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively, are held fixed to a separation of 20 centimeter. Their separation is r is equals to 20 centimeter. So where should a third charge particle C be placed so that it does not experience a net electric force? ताले कोठी गोटे थर्ड चार्ज पार्टिकल में रखिले से नेट फोर्स के नेट फोर्स ऑन दैट थर्ड चार्ज पार्टिकल विल बी 0. ताले केमती जानिबा को पोजीशन? देखो ए भीतर भी बहुत सारा पोजीशन अछि. यस और नो? सो इन बिटवीन ए एंड बी बहुत सारा पोजीशन अछि. बी आउट साइड रे बहुत सारा पोजीशन अछि एंड लेफ्ट टू ए पोजीशन भी अछि. कोट रखले ताले हबो. ताले देखो गोटे रफ डायग्राम तुमको एक्सप्लेन करछि. सपोज एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज. ओके, मैग्नीट्यूड ग्रेटर कि मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ग्रेटर मैग्नीट्यूड एंड स्मॉलर मैग्नीट्यूड. जो जदि हम एठी गोटे चार्ज रखली सपोज क्यू भीतर, ता माने एई बिगर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जोटा अछि सेटा कोन करियो? रिपेल करियो. ओके, एंड ए स्मॉलर पॉजिटिव ताऊ अगेन रिपेल कला. देखो दैट मीन्स एमती गोटे लोकेशन रहइबो जदि ए दुटा मैग्नीट्यूड कोन हे जिवे इक्वल हे जिवे, देन नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू विल बी 0. ठीक कथा. अच्छा, बर्तमान मु कहूँ आउटसाइड रखले कौन हम? देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड. यदि मुझे थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू एठी रखली तमाने एटा ए एटा बी. सो ए बर्तमान स्मॉल क्यू पर फोर्स पकेबो, दिस इज फोर्स ड्यू टू ए. ओके, एंड बी भी कौन करियो? रिपेल करियो फोर्स ड्यू टू बी. ए दुटा फोर्स कौन रहा? सेम डायरेक्शन रहा. सो केबे भी 0 हेबेनी. ओके, सिमिलरली तुम यदि लेफ्ट टू ए रखिल भी से सेम सिचुएसन. ये यदि क्यू रखिला ए ताको रिपेल करा देखो एंड बी भी ताको रिपेल करिवो. सो नेट फोर्स केतोली 0 होबनी. दैट मीन्स जदि तुम देखिबो लाइक चार्जेस अछंती. ओके, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. जदि तुम देखिबो लाइक चार्जेस अछंती हमरो पॉजिटिव पॉजिटिव किंबा नेगेटिव नेगेटिव, एटा हला लाइक चार्ज. लाइक चार्ज थिला माने ताको भीतर इन बिटवीन देम गोटे पॉइंट नबो तमे. ओके, सो जदि तुम कौन थी आउ से पॉइंटा केमती कौटी लाई कर क्लोजर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज. ओके, ताले मु शॉर्टकट रे लिखि दउछि एठी लाइक चार्ज. ओके, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट is present in between the charge, in between like charges, and it lies closer to the charge of smaller magnitude. Okay, closer to the charge of smaller magnitude. देखिए आम सल्व कर देखा. ओके, यही तक जिनस को तुम पूरा माइंड रे फिक्स रख. सो आम सल्व करिया. बर्तमान सपोज मुझे नेली एटा थर्ड चार्ज पार्टिकल कौट अच्छी बर्तमान ये रहा थर्ड चार्ज पार्टिकल कौन देती. सपोज थर्ड चार्ज पार्टिकल इज क्यू. ना क्यू बर्तमान रहा कौटी हम तो जाने. देखो ये आर इज 20 सेंटीमीटर मीन्स ये टोटाल रहा 20 सेंटीमीटर. ओके, ए टू बी बस. ताले क्यू रो पोजीशन केते? ए पॉइंट है सी पोजीशन. सो लेट दिस डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर. दैट मीन्स A to C distance will be how much? This is 20 minus x centimeter. This will be
20 माइनस एक्स सेंटीमीटर से कथा कौन कहला बर्तमान देख कथा कहला जे नेट फोर्स ऑन सी विल बी 0 देख ताहले नेट फोर्स 0 माने कौन जानिबा नेट फोर्स 0 केमती देख होउची सपोज ये मुझे कहली व्हाट इज द एटा क्यू चार्ज रहा ताले ए रे जो चार्ज अच्छी पॉजिटिव क्यू चार्ज टाक कौन करिवो रिपेल करिवो यस सो दिस इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वेक्टर अच्छा बी रे जो पॉजिटिव चार्ज अच्छी तो सी रे थिया क्यू को कौन करिवो रिपेल करिवो सो दिस इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी वेक्टर ताले जदि नेट फोर्स 0 हो as per the question as F net at C is equal to 0 which implies FCA vector magnitude is equals to FCB vector magnitude एटा ला पाठ होती सो FCA केते C और A को कंसीडर करिया ओनली CA को देखिबा ओके देखो ठीक से जदि हम C और A को ओनली ठीक से कंसीडर करिबा C and A so KE okay that is 8 into 10 to the power minus 6 into q 8 into 10 to the minus 6 into q divided by distance square distance is 20 minus x centimeter whole square is equal to fcb c और b को consider करो only in between c and b भल से देखिबा so ke first charge is 2 into 10 to the minus 6 second charge is q divided by distance is x centimeter whole square yes I hope it is clear to all of you now हम solve करियो जिबा देखो बहुत सारे कैंसिल के होछ हमरो 10 to the minus 6 10 to the minus 6 yes q दिटा कैंसिल हो गला ke कैंसिल हो गला हमरो अच्छा एटी 2 एटी 8 4 हला देखो बहुत साइड रे सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होला आ रहला केते एलएचएस साइड रे so 4 divided by 20 minus x whole square is equals to right side 1 divided by x square clear that means 4 is equals to 20 minus x divided by x whole square एथरे किसी डाउट नहीं है सो हम लिख परिबा 20 minus x by x is equals to root over of 4 that is 2 so after cross multiplication you will get 20 minus x is equal to 2x so 3x is equals to 20 which implies x is equals to 20 by 3 and the unit is in centimeter अच्छा x टा कौन नहीं है x टा 20 minus 3 और डिस्टेंस टा कोट नहीं है देखो फ्रॉम b चार्ज और फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज सो देखियो x is equals to 20 minus 3 from 2 into 10 to the power minus 6 कूलम चार्ज बुझेला बस निजे एमती सॉल्व करो जानी परिबो ओके इट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस नेक्स्ट आम जा सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश्ड देखो ठीक से ओके दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 okay so question number 6 देखो question number 5 and question number 6 same situation तुम पाइबो okay देखो हम डायग्राम अगेन करूची सुविधा हो बुझे पय हमको so this is suppose these are two charges okay one is your a another one is b a is having charge 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and this is b is having minus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and the separation between their center to center 20 सेंटीमीटर यस देखो प्रीवियस क्वेश्चन में बीटा कौन था ए एंड बी लाइक चार्जेस थे ये अच्छे नंबर अनलाइक चार्ज ताले एठी यार ट्रिक कौन को से कहूँ व्हेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल सी बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ताले कौन करिया पड़ियो एठी मन रख एटा इन बिटवीन रहबे एठी रहबे आउटसाइड कोड रहबो क्लोजर टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज सेठी होतरा इन बिटवीन एंड क्लोजर टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज it will become outside closer to magnitude of small charge so let this is your point C okay it will third charge particle Q suppose okay think that third charge particle is Q okay तापर C ऊपर कौन फोर्स पड़ा अच्छा C टा B टू केते डिस्टेंस अछि let this distance is x centimeter ताले C A टू केते डिस्टेंस रहला
दैट इज योर 20 प्लस एक्स सेंटीमीटर क्वेश्चन आप देखिबार नहीं 20 प्लस एक्स सेंटीमीटर नाउ थिंक को फोर्स पड़ला सी उपरे देख बी ताको कौन करिवो अट्रैक्ट करिवो स्मॉल क्यू को बी अट्रैक्ट कला कारण नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कला दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी वेक्टर अच्छा एटा हमर अछि पॉजिटिव चार्ज 8 × 10⁻⁶ तो स्मॉल क्यू कौन करिवो से रिपेल करिवो दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वेक्टर ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स ऑन कौन चार्ज प्रेजेंट एट सी दैट इज 0 सो एटी क्यू आम लिखिपर नेट फोर्स 0 माने एफ सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ सी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एति गेला पाठ इधर यस तो मैग्नीट्यूड लिखिबे हमें बर्तमान एफ सी ए सो कूलम्स कांस्टेंट के ई इंटू सी आ को देखिबा ओके ए रे अछि हमर चार्ज 8 × 10⁻⁶ इंटू रहा क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर सो डिस्टेंस इज 20 प्लस एक्स सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ सी बी के ई इंटू सी रे हमर चार्ज अच्छा अच्छा मैग्नीट्यूड ने जाए Q1 Q2 कौन कहती विथ मैग्नीट्यूड दैट मीन्स सिंपली मन रख विदाउट साइन ओके सो मैंने 2 × 10⁻⁶ इंटू क्यू डिवाइडेड बाय भूल माइनस पकईदेला ना रंग हो आंसर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिस्टेंस इज सी एंड बी विथ डिस्टेंस एक्स सेंटीमीटर होल स्क्वायर नाउ आम सॉल्व करिया ओके क्या मान कर सॉल्व कर इजी लगे सो क्यू बोथ साइड रू क्यू कैंसल है 10⁻⁶ कैंसल है तापर कूलम्स कांस्टेंट भी कैंसल है आउ कि कैंसल हो सेंटीमीटर स्क्वायर भी कैंसल है ये 2 अच्छे 4 अच्छे जो आमर रहा के आर एच एस आमर आसला 4 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एच एस आसला आर एच एस के 1/x स्क्वायर यस ताला हमें लिखिपर 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 सो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x सो 20 इज इक्वल हाउ मच 2x माइनस एक्स दैट इज x सो x इज इक्वल्स टू हमें पाइले x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर कौटू एटा फ्रॉम -2 माइक्रो कूलम चार्ज देखो ये जो क्यू सॉरी एक्स डिस्टेंस कौट मेजर कर एक्सटा सी रोजिशन एक्स सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज बी को चार्ज अच्छी -2 × 10⁻⁶ कूलम ये मेंशन कर फ्रॉम -2 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज यस आई होप किसी डाउट नहीं थे यस ओके नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा yes question number 7 so what would be the electrostatic force between two aluminum sphere बहुत भलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो what would be the electrostatic force between two aluminum spheres each of mass 1 gram okay as per the question we have to draw the diagram there are two aluminum spheres q1 and this is q2 and separation is r okay and r equal to given 1 meter each of mass 1 gram this is of 1 gram and this is of 1 gram also question dela if the charge on each sphere that means charge on each sphere means same achi charge on each sphere that is q1 and q2 is equals to 1% of total positive charge of nuclei on any one of the sphere 1% of total positive charge on nuclei of को sphere aluminum sphere okay nuclei of हमें लिख पारिबा nuclei of 1 gram aluminum sphere एटा हम क्वेश्चन रे देछि सो आम बर्तमान आमर ड्यूटी यही तो फाइंड करिया भलसे टोटाल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लिय ऑफ 1 ग्राम एल्युमिनियम स्फीयर ताको केमती बाहर करिया देख सो 1 ग्राम एल्युमिनियम स्फीयर रे केते पॉजिटिव चार्ज अछि देखो ताको कैलकुलेट कला परे आम करिया तार 1% नबा तार 1% हला हमर स्मॉल q1 q2 वैल्यू पाइबो तो देन k q1 q2 फार्मूला पकि तुम बाहर कर परिबो k q1 q2 r स्क्वायर ओके लेट मु अज्यूम कर देली
ये जो टोटाल टाक मेंशन कर देख ग्रीन कलर रे लेट इट्स वैल्यू इज क्यू कैपिटल क्यू लेट इट इज क्यू टोटाल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ 1 ग्राम एल्युमिनियम स्फीयर ओके ताले 1 ग्राम एल्युमिनियम स्फीयर रे केते पॉजिटिव चार्ज बाहर करबा केमती वर्तमान सेटा हमरो डाउट देख कौन करवा सो आमको देछि कौन गिवन मास इज इक्वल्स टू 1 ग्राम तमाने आम बाहर कर नंबर ऑफ मोल्स केते हम गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास सो गिवन मास केते 1 ग्राम मोलार मास 27 इन केस ऑफ एल्युमिनियम ओके एटा नंबर ऑफ मोल्स अच्छा गोटे मोल रे केतटा एटम अछि इन 1 मोल 6.023 into 10 to the power 23 atoms okay atoms of aluminum be careful तारे मुझे पचारि इन 1/27 मोल्स केतरा एटम हम 6.023 into 10 to the power 23 into 1/27 कौन लिखा atoms of aluminum अच्छा 1 आटम आटम्स ऑफ एल्युमिनियम माने गोटे आटम एल्युमिनियम रो गोटे आटम रे केतरा पॉजिटिव चार्ज अछि 13 टा तार एटॉमिक नंबर केते 13 ताले हम लिखिबा टोटल पॉजिटिव चार्ज केते ताले हम जदी यूनिटरी मेथड को देखो फॉलो करी करी चलली यूनिटरी मेथड को हम फॉलो करी चलुछ ओके सो हम बर्तमान यूनिटरी मेथड को फॉलो करिवा सो इन 1/27 मोल्स केतरा एटम रहला 6.023 into 10 to the power 23 into 1/27 atoms of aluminum so मोर एठी कहबार मीनिंग इन 1 atom of aluminum ओके केते चार्ज अछंती जो केतरा पॉजिटिव चार्ज अछि 13 टा पॉजिटिव चार्ज 13 इलेक्ट्रॉन जेतरा पॉजिटिव जेतरा नेगेटिव 13 इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस इन 6.02 into 10 to the power 23 into 1/27 atoms of aluminum okay केतरा पॉजिटिव चार्ज रहिबे सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू हम इजीली फाइंड कर परिबा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 6.02 into 10 to the power 23 into 1/27 into 13e okay एतिटा पॉजिटिव चार्ज 13e ओके दैट मीन्स आम बाहर कर बर्तमान केते पॉजिटिव चार्ज अच्छे इजिली कैलकुलेट कर 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 ओके सो क्यू इज इक्वल्स टू आम बाहर कर 6.02 into 10 to the power 23 into 1/27 into 13 into 1.6 10 to the minus 19 बुझ पाइले केमती लाइन आसला डिटेल्स रे गली चाहिए सर्ट रे भी कर पारथांती बट जो सर्ट जानी पार्छ किसी असुविधा नहीं बहुत स्पीड कैलकुलेशन कर सो या सल्व कले तुम आसो 4.64 into 10 to the power 4 Coulomb सो दिस इज कैपिटल क्यू देखो हम पढ़ी कैपिटल क्यू पर आम कौन करवा 1% ऑफ कैपिटल क्यू ना Q1 Q2 बाहर स्मॉल Q1 Q2 10 स्मॉल Q1 इक्वल्स टू स्मॉल Q2 दैट इज 1% ऑफ कैपिटल Q 1% मीन्स 1/10 to the power 2 into कैपिटल Q 4.64 10 to the power 4 so this will be 4.64 into 10 to the power 2 Coulomb easily बाहरी गला हमर देखो कम टू द क्वेश्चन Q1 Q2 वैल्यू पाइला एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर एबे हम कैलकुलेट कर परिबा इजीली यस सो फोर्स इक्वल टू KE Q1 into Q2 by R square that means 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 that means 4.64 10 to the power 2 both are having same charge that is square divided by R is 1 meter that is 1 square so this will give us 1.94 into 10 to the power 15 Newton okay जब सब CHSE स्टूडेंट तो न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस करो बुझला नहीं सो CBSE पिला जमती हमर CBSE स्टूडेंट सेमती न्यूमेरिकल सब प्रैक्टिस करछन बहुत तम पेंती न्यूमेरिकल बीपीपी ओके मॉडल्स जते क्वेश्चन कर परिबो ओके जते रेफरेंस पाई सॉल्व कर परिबो भलो कथा क्लियर so this is the answer as per the question number 7 I hope it is clear टी लेंथी थिला तुम भावुच किसी लेंथी ना थोड़े कर दियो सॉल्व करो इजीली जानी पारिबो ओके
Clear? Question number 7 clear? Next is our question number 8. आम question number 8 solve करिया. ओके देख question number 8 कौन देला. Question number 8 कहूची the electron and proton in hydrogen atom are separated on average by a distance of about 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Suppose it is a hydrogen atom, it's the nucleus, yes, and it is the plus. This is that orbit in which this is one electron system na, one electron is revolving. So question कौन देइछ देखो. Electron and proton, ये proton रहिला, ये तमर electron रहिला, separated by a distance, that distance is r, and given r is equals to 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. अच्छा, find the magnitude of electric and gravitational force that each particle exerts on each other and the ratio. अच्छा तुम पचारला F electric force केते दीटा भीतर बाहर करबा, F gravitational force बाहर करबा हमें, F gravitational, and third thing find the ratio of electric force to gravitational force. Electric F electric by F gravitational केते रेशियो एतिक हम फाइंड करार अछि. देन F इलेक्ट्रिक हम फाइंड करबा k q1 q2 by r square फॉर्मूला. F ग्रेविटेशनल फोर्स केते हो g m1 m2 by r square. ओके देन तार हम रेशियो फाइंड करबा. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो दे देइ तुमको. क्लियर बस. सो बर्तन हम सॉल्व करबा F इलेक्ट्रिक फॉर्मूला k e. ओके देन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय r square. इजीली सॉल्व कर परिबा हमें 9 into 10 to the power 9 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ सब चार्ज मैग्नीट्यूड ने आबो 10 to the power minus 19 रो होल स्क्वायर. क्लियर डिवाइडेड बाय r square. r केते वैल्यू देछि 5.3 10 to the power minus 11. सो 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर तर स्क्वायर. याको हम सॉल्व करले केते पाइबा देखो 0.82 into 10 to the power minus 7 न्यूटन. और आम या लिखि पार 8.2 into 10 to the power minus 8 न्यूटन. दिस इज योर F इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्लियर है. नेक्स्ट आम बाहर करबा F ग्रेविटेशनल. Fg is equals to capital G m1 m2 by m1 m2 means mass of proton, mass of electron divided by r square. So 6.67 into 10 to the power minus 11 कार value da capital G. Mass of proton that is your 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Then mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg divided by r square. R is your 5.3 into 10 to the power minus 11 meter per whole square. याको सॉल्व करले हम पाइबा 3.6 into 10 to the power minus 47 न्यूटन. दिस इज F ग्रेविटेशनल. देन हम एरो रेशियो नबा कैलकुलेशन स्पीड करी करबो. ओके मु एठी कैलकुलेशन ओनली रिजल्ट लिखुची सो दैट वीडियो न लेंथी हे जिवो. बुझिला नै. सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करिया विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इंटरवल सेटा टिक हम पे डिफिकल्ट हे जिवो. सो नेक्स्ट हम नबा का रेशियो F E by F G एज पर द क्वेश्चन. सो नबा हमें 8.2 into 10 to the power minus 8 divided by 3.6 into 10 to the power minus 47. So याको सॉल्व कला मैंने आंसर केते आसीबो 2.2 10 to the power 39. ओके एंड रेशियो इज ए नंबर यार किसी यूनिट न थाए. आई होप एटा केते नंबर क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन दिला. क्वेश्चन नंबर 8. yes question number 8 finished. Then I will do question number 9. okay so कौन पचरला देखिबा. how many same number of excess electrons must be added to each neutral lead sphere to balance the force of gravity between them. अच्छा given mass of each lead sphere is 1 kg. ठीक अछि एटा दिटा lead sphere देला. ओके सो एटा ला द मास देछि 1 kg and separation between their center to center is 1 meter. अच्छा केते अच्छा जण जण बर्तन कोन करिवे दे कहलो अट्रैक्ट करिवे को फोर्स रेटा एटा ला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज Fg, दिस इज आल्सो Fg. से पचारुची केतेटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन हम सेठी ऐड करबा याकू एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे देबा
या भी सेम नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन दबा दुटा कौन हो नेगेटिवली चार्ज बॉडी तापर से कौन करेंगे दे स्टार्ट्स टू रिपेल इच अदर बुझे ना नहीं बास से क्वेश्चन सो रिपेल कर बर्तमान एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रे सच दैट से कौन कहला देख टू बालांस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एमती एक्सेस इलेक्ट्रॉन दब गोटे पर्टिकुलर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आम दबा जमीक एफ जी मैग्निट्यूड एफ इ मैग्निट्यूड सहित इक्वाल होटा क्वेश्चन से क्लीयर है मैंने तुम आंसर कर ओके तो चिंता कर सपोज आफ्टर कौन एक्सेस इलेक्ट्रॉन देला यार चार्ज सपोज है क्यू यार भी चार्ज हम क्यू कारण सेम नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन दौच बुझे ना नहीं नेगेटिव चार्ज हम दैट इज माइनस क्यू क्लीयर किंतु आम नवा कौन मैग्निट्यूड नेला क्यू नवा तो अच्छा बर्तमान कह एफ इ के इ क्यू इंटू क्यू बै आर स्क्वायर येस तो मैंने आंसर आसो 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर बै 1 that is equal to F is equals to 9 into 10⁹ क्यू स्क्वायर दिस इज योर F इलेक्ट्रोस्टैटिक बर्तमान कह F ग्रेविटेशनल फोर्स के G इंटू M1 इंटू M2 बै आर स्क्वायर ताले जार भैल्यू आमर हम 6.67 इंटू 10⁻11 मास दीजिए कौन 1 kg 1 इंटू 1 डिवाइडेड बै 1 स्क्वायर सो एफ जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन फोर्स यूनिट कौन फोर्स यूनिट है न्यूटन सो पचार बर्तमान कौन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ इ इज इक्वल्स टू एफ जी ये क्वेश्चन सरला आंसर ओके सो एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ इ इज इक्वल्स टू एफ जी तो केते हम आंसर कह 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 so q square will be केते 6.67 इंटू 10⁻11 divided by 9 इंटू 10⁹ so it will be our तो डायरेक्ट जो आम q वैल्यू लिखा q वैल्यू केते बता डायरेक्ट हम लिखुचे आंसर 8.6 इंटू 10⁻11 कूलम मु डायरेक्ट आंसर ये लिखि पार्छ बिकज मुझे सॉल्व कर सारी ओके तुम ये सॉल्व कर बर्तमान क्वेश्चन क्यू वैल्यू पचारनी पचार केते नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन वी नो क्यू इज इक्वल्स टू एन इ क्यू इज इक्वल्स टू एन इ इज इक्वल्स टू 8.6 इंटू 10⁻11 तो बर्तमान एन वैल्यू केते 8.6 10⁻11 डिवाइड बाय इ वैल्यू है 1.6 10⁻19 सो आंसर आसो हमरो 5.37 इंटू 10⁸ तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन के 5.37 इंटू 10⁸ बस नंबर हैज नो यूनिट दिस इज योर आंसर ओके क्वेश्चन देखला मैंने सब क्वेश्चन जन जन डिफर कर ओके क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश्ड नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10 ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10 yes a charge capital Q is divided into two parts suppose this is charge capital Q okay and it is divided into two parts such that they experience a maximum electrostatic repulsion गोटे पार्ट केमती आसो गोटे पार्ट ये टाइप आसो आ गोटे पार्ट केमती आसला आ गोटे पार्ट जस्ट लाइक दिस डायग्राम टी बुझाऊँगी सो गोटे तुम स्मॉल क्यू है अदर विल बी कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू बस तो से केते डिस्टेंस आपार्ट रही आरटा केते what must be the value of R so that they experience a maximum electrostatic repulsion कारण जन जन बर्तमान कौन करेंगे रिपेल करेंगे ना यहाँ है रिपल्सन बस so that they exert maximum electrostatic repulsion अब केमती करवा देख तो मैक्सिमम फोर्स पचार मन रखी था से टाइम जब आम ग्राफ करवा सो कौन हम मैक्सिमा एंड मिनिमा आम स्लोप के 0 मैक्सिमा एंड मिनिमा आम स्लोप के हुए 0 देख मुझे तुमको छोट कनसेप्ट कहूँ सपोज ये गोटे ग्राफ कली एनी ग्राफ वाई एक्स ग्राफ जो मुझे पचारि ये मैक्सिमा किए मिनिमा किए पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू को पॉइंट दूसरी देखो ए पॉइंट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू बी पॉइंट गिव्स द मिनिमम वैल्यू ताले ए पॉइंट रो टैंजेंट ड्र करी है यार स्लोप के 0 बी पॉइंट टैंजेंट ड्र कले स्लोप है 0 सो मैक्सिमा स्लोप रो फॉर्मूला कौन dy by dx ओके सो m इज इक्वल्स टू dy by dx के आसला तार 0 कौटी आट ए एंड बी तार मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप के 0 सो मन रख जो आमर कंडीशन मुझे लिखिदे व्हेन वी नो
এটা सब फास्ट ईयर कॉन्सेप्ट वी नो इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ जेड मन रख इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ जेड देन df by dz is equal to 0 when f is maximum है ये लाइन टाक समस्त मन रख ठीक से ताले एठी हो जन मोर कोन फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ q का q डिवाइड कला पर स्मॉल q कैपिटल q तो डिवाइड है स्मॉल q और कैपिटल q माइनस स्मॉल q दीटा चार्ज बाहर तो फोर्स टा कहाँ पर डिपेंड कला फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ दिस एक्सक्लूडेड पार्ट दैट इज q सो एफ इज ए फंक्शन ऑफ q जदि हम कहबा हियर एफ इज ए फंक्शन ऑफ फोर्स और रिपल्सन इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल q तो हम कौन लिखिबा फॉर एफ टू बी मैक्सिमम को फॉर एफ टू बी मैक्सिमम हम लिखिबा df बाई d स्मॉल q इज इक्वल्स टू 0 এইটা বর্তমান ମୁଁ तुमको कहली বর্তমান আমার চার্জ কিଏ चार्ज अच्छी दुटा चार्ज अच्छी गोटे तुम स्मॉल क्यू अदर वन इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू एंड देयर सेपरेशन केते लेट इट बी आर आर केते होगा दरकार बर्तमान क्वेश्चन केते देखो फोर्स वैल्यू केते हो एफ इज इक्वल्स टू के इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर बस एटा ला फोर्स ऑफ रिपल्सन क्वेश्चन देला बर्तमान कोन फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम लेफ्ट साइड में करूँ फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम फॉर एफ टू बी मैक्सिमम कौन फॉर्मूला डी एफ बाई डी स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू 0 सो डी बाई डी स्मॉल क्यू अच्छा एफ वैल्यू केते के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 0 यस दिस विल बी इक्वल टू 0 कांस्टेंट किए बापा कांस्टेंट है आमर ये देखो के ओके केटा आमर कांस्टेंट अच्छा ये कौन अच्छी विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू ना सो विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू मैंने के बाई आर स्क्वायर इज ए कांस्टेंट तक बाहर कौन आम कौन पचार कि सॉरी मोटे रंग मिसकनसेप्शन हो जाए चार्ज क्यू दे पचार फाइंड द डिवीजन सॉरी नॉट फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिवीजन पचार अच्छा फाइंड द डिवीजन इट इज आस्किंग अबाउट फाइंड द डिवीजन नॉट आर इक्वल टू क्वेश्चन आर केमी रेशियो आम डिवीजन कला मैंने आमर बाहर कौन पोस्ट मैक्सिमम हो लेट द डिस्टेंस इज आर सो आर इज कांस्टेंट क्वांटिटी सो के बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर को आसला आउ रहा के डी बाई स्मॉल क्यू ऑफ आर ब्रैकेट रे क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओके ब्रैकेट इक्वल टू 0 देखो के बाई आर स्क्वायर जो राइट साइड को नेबी सो 0 बाई के बाई आर स्क्वायर के समथिंग 0 सो आंसर हमारा आसला डी बाई डी क्यू ऑफ एटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखिबा क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू इंटू स्मॉल क्यू के दब क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 जान मुझे कौन कली क्यूटा को फास्ट या सहित मल्टीप्लाई कली देन या सहित मल्टीप्लाई कली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खाली लिखा है ओके तो देख भल से बुझ ये किए कैपिटल क्यू कांस्टेंट बाहर को आसला आ रहा के डी क्यू बाई डी क्यू ओके माइनस क्यू स्क्वायर डेरिवेटिव के 2q दैट इज 0 डी क्यू बाई डी क्यू इज 1 सो क्यू माइनस 2 स्मॉल क्यू इक्वल टू 0 दैट मीन्स कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल 2 इंटू स्मॉल 2q सो स्मॉल क्यू वैल्यू के क्यू बाई 2 सो पचार क्वेश्चन कौन फाइंड द डिवीजन पचार सो केमती रेशियो तुमको 50-50 डिवाइड करा जो टोटल चार्ज है क्यू तो क्यू बाई 2 रे डिवीजन करा दरकार आज पर द क्वेश्चन जान पाइल क्वेश्चन केमती तुम भावन कौन क्वेश्चन डिफिकल्ट एफ इज ए फंक्शन ऑफ जेड ये सब आम मन ना जदि मन ना तुम आक्वेंटेड हवा दरकार बर्तमान शिखा दरकार है यहाँ गोटे बर्तमान पार्ट जोटा एकदम शिख ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जावा नेक्स्ट क्वेश्चन जावा क्वेश्चन नंबर के 11 यस देखो 2 particles having mass m and charge q each are to be placed on a rough horizontal surface with coefficient of static friction ओके ठीक अच्छे दुटा चार्ज पार्टिकल अच्छी दिस इज वन चार्ज पार्टिकल भाव दियो दिस इज अनदर चार्ज पार्टिकल यार मास है m चार्ज q रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एटा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देला म्यू सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी देनी म्यू लिखिदेबा अच्छा व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी ताको भीतर सेपरेशन एटा आर पचला तो केते सेपरेशन हले दे मस्ट बी स्टेशनरी तो स्टेशनरी केते होबे देख बोलो जेता नेट फोर्स तापर 0 पड़िबो देखो ए क्यू
ए क्यू कौन कर रिपेल कर ओबियसली रिपेल कला रिपल्सिव फोर्स क्लियर। अच्छा ताल तो सी पलैबा कथा किंतु जीवन से कौन से रिमेन स्टेशनरी दैट मीन्स पछू कि गोटे फोर्स पड़ो से फोर्सटा किए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ है फ्रिक्शनल फोर्स एफ ओके। सो कहार भैल्यू दुटा इक्वल हम ये कह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके फॉर आम लिखा पार्टिकल ऑफ मास m फॉर पार्टिकल ऑफ मास m टू बी स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m टू बी स्टेशनरी आम कहीपर कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f कैपिटल F वैल्यू केते स्मॉल f वैल्यू केते देखिबा कैपिटल F इजिली आम कहीपर के ई क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर एटा कैपिटल F स्मॉल f केते स्मॉल f माने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन अच्छा नॉर्मल रिएक्शन पुणी केते एठी वेट पहला देख तौक एम जी ओके एंड नॉर्मल रिएक्शन along पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो आज जंपिंग इज एब्सेंट माने पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव करू नाही। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू हाउ मच एम जी। सो इटार आंसर है म्यू इंटू एम इंटू जी फास्ट रे बहुत अकाउंटेड होता। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला म्यू एम जी बस पुट द वैल्यू। सो के ई इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर सॉरी आम कौन बाहर करवा आम बाहर करवा सेपरेशन यस आम बाहर करवा सेपरेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ई इंटू क्यू स्क्वायर तारे ओबियसली आर स्क्वायर वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू एम जी एंड आर वैल्यू डायरेक्ट लिखिए रूट ओवर रे के ई वैल्यू है 1/4π0 आर रहा के क्यू स्क्वायर बाय म्यू एम जी तार रूट ओवर दिस इज योर फाइनल आंसर बुझेगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन था ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 आई होप क्वेश्चन भल लगी बहुत इजी कॉन्सेप्ट अच्छी। क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कौन कला देखो डिस्कस various forces and angles involved in two identical simple pendulum with charge above q1 and q2 hanging from the same point okay दुटा सिंपल pendulum थिले एमती पढ़ी मन पका फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट ये टाइप डायग्राम थिला माने न्यूट्रल थिले ओके न्यूट्रल एतरे जन को तुम दे देबो कोन चार्ज q1 अदर को दे देबो हम चार्ज q2 मन कर एटा चार्ज q लिख दियो ओके बहुत कम केते चार्ज देचे चार्ज q देले सपोज चार्ज q या कोई चार्ज देले q तो कौन है लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर जन जन को रिपेल करेंगे तो डायग्राम केमती हम जस्ट लाइक दिस यही टाइप डायग्राम तुम पाइब जन रिपेल कला दिस इज योर चार्ज बब रेडी यहाँ मास m बस सो थीटा थीटा सेम अमाउंट रिपेल कले सो थीटा एंगल बस डायग्राम टिके तो है सो एडजस्ट कर अच्छा दिस इज योर कौन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यस से पचार कौन डिस्कस भारियस फोर्सेस कौ को फोर्स पड़ा ये गोटे है जेकोसी पार्टिकल कम ना ये एम उपरे गोटे फोर्स पड़ा तुम देख एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सब सिंपल कथा। अच्छा ये गोटे स्ट्रिंग अच्छी मैंने अटाच होगी एलॉन्ग द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स पड़ो क्लियर आउ कौन फोर्स पड़ो वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड सरला वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड। सो आम जो देखा देख भल जिनटे ये एमटा बर्तमान कौन अच्छी इक्विलिब्रियम अच्छी बर्तमान एम इज इन इक्विलिब्रियम यदि इक्विलिब्रियम है ताहले नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो आम देख टेंशन टी को देख एफ ई एंड एम जी एफ ईटा को एक्सिस अच्छे नेगेटिव एक्स एक्सिस एम जी नेगेटिव वाई एक्सिस बट टी गोटे एक्स एक्सिस ना कि वाई एक्सिस ना ताको आम कौन करवा कंपोनेंट स्प्लिट करवा तो दुईटा कंपोनेंट तार बाहर देख दिस इज वन कंपोनेंट दिस इज अनदर कंपोनेंट यहाँ कार कंपोनेंट टी कंपोनेंट सो गोटे टी कस थीटा गोटे टी साइन थीटा कौटा केमती हम देख बर्तमान आम शिख जेड फॉर्मेट जो थी एंगल सेम आस देख जेड फॉर्मेट तो दिस टू एंगल्स आर इक्वल
ओके पैरेलल लाइन एटा इंटरसेक्ट कला दिस टू एंगल्स आर इक्वल मीन्स आम कहि परिबा एठी भी देखो सेम जेड फॉर्मेट देखा होछि जो मैंने अल्टरनेट एंगल करेस्पोंडिंग एंगल सब जानि न बर्तमान तुम जेड फॉर्मेट रे मन रख किछि असुविधा होनी सो दिस इज थीटा मीन दिस एंगल विल बी थीटा सो एंगल अटैचिंग कंपोनेंट cos कंपोनेंट दिस विल बी t cos थीटा t sin थीटा बुझिला ना इतरे क्लास रे पढ़ा हुए सब वेराइटी स्टूडेंट थांती तार भाई सब ट्रिक रे पढ़ावा दरकार ओके जो मन रखतो जे अल्टरनेट एंगल करेस्पोंडिंग एंगल भल हो किछि असुविधा नै अपोजिट एंगल ए सब किछि असुविधा होबन त भाई जो माने मन रखना जेड फॉर्मेट मन रखो सो कौन है टी साइन थीटा क्या सहित इक्वल है एफ सहित इक्वल है सो आम लिखा टी साइन थीटा फ्रॉम फिगर आम लिखा एफ और आगे लिख टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड टी cos थीटा इज इक्वल हाउ मच टी cos थीटा इज इक्वल टू mg दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2 बर्तमान आम कौन करवा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करवा केते बाहर टी साइन थीटा बाय टी cos थीटा तो टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाय mg शॉर्टकट में लिखली एफ सो टी कैंसिल आउट है सो tan थीटा केते बाहर tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाय mg ओके सो पचार क्वेश्चन तुम कौन जे डिस्कस द वेरियस फोर्सेस एंड एंगल्स इन्वॉल्व एंगल तो थीटा गोटे अच्छी थीटा केते बताले tan इनवर्स एफ बाय mg दिस इज द एंगल इन्वॉल्व क्लियर ओके तो नेक्स्ट आम जा आ गोटे पचार वेरियस फोर्सेस एफ वैल्यू केते एफ वैल्यू डिस्टेंस जो आर नहीं जावा आम के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर तापाई किसी प्रोब्लेम ना वेट तो mg अच्छी टेंशन टी को केमती बाहर करा देख मुझे गोटे जिनस लिखिली tan थीटा इक्वल टू एफ बाय mg ना देख मुझे लिखुची tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाय mg आम जानते tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस जदि मैं गोटे रईट एंगल ट्रायंगल करी यदि यहाँ मुझे थीटा देली tan थीटा इक्वल के परपेंडिकुलर बाय बेस सो परपेंडिकुलर जगह मुझे लिखी के एफ बेस जगह मुझे लिखी के mg ताले एच वैल्यू के एच वैल्यू हम मोर एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर माने m स्क्वायर g स्क्वायर रूट ओवर बस ताले एबे को t cos थीटा वैल्यू के t cos थीटा इक्वल टू mg में लिखा है टेंशन t देखो इजीली बाहर सो t cos थीटा वी हैव t cos थीटा इक्वल टू mg सो व्हिच इंप्लाइज t इनटू देखो ये जो फिगर मु करी ना ये फिगर रू राइट एंगल ट्रायंगल रू cos थीटा वैल्यू इजीली हम प्रेडिक्ट कर परिबा cos थीटा वैल्यू केते cos थीटा इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय f स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर रूट ओवर राइट हैंड साइड रे mg बतन mg कैंसिल हैला सो व्हिच इंप्लाइज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू केते हो f स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर रूट ओवर देखला बहुत इजीली कैलकुलेट हैला t रे वैल्यू दिस इज द आंसर सो डिस्कस द वेरियस फोर्स एंड एंगल्स इन्वॉल्व पचार एति केला तार कॉन्सेप्ट क्लियर ए डायग्राम को कंपोनेंट स्प्लिट करिवो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करा हो देन ताउ सॉल्व करा हो क्लियर ओके अच्छा नेक्स्ट टाइम जीवा क्वेश्चन नंबर 13 को ठीक है नेक्स्ट तो two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings makes an angle of 30 degree with each other. Okay, these are identical sphere is nahi. So हम diagram first करिया. This is our diagram. देखो. This total angle is given 30 degree. Then when suspended in a liquid of density 0.8 gram per cubic centimeter, the angles remain same. अच्छा तो डायग्राम टे छोटो डायग्राम करिबा तो हम बुझिया को इजी हबो देखो सॉरी हमरो एटाला डायग्राम अच्छा नेक्स्ट केस से कोन कहै व्हेन बोथ सस्पेंडेड इन ए लिक्विड वर्तमान से लिक्विड रे बुडे दिया गला ओके दियन जब कौन करा लिक्विड में इंसर्ट कर देले क्लियर द एंगल रिमेन्स सेम ता एंगल भी 30 डिग्री अच्छे ए लिक्विड रो डेंसिटी केते so density of liquid it is given density of liquid that is your 0.8 gram per cubic centimeter okay then what is the dielectric constant of liquid a liquid or dielectric constant capital K or epsilon r relative permittivity yes that is equal to question mark
the density of sphere is given, density of sphere, acha, density of sphere, density of sphere rho s, okay, that is given 1.6 gram per cubic centimeter. कौन करवा ताले देख केमती आम ताको इजिली सॉल्व करवा। बर्तमान देख से कहूँ सस्पेंडेड कौन टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर माने ऑलरेडी से जन रिपेल कर। अच्छा रिपल्सिव फोर्स पड़े केते एंगल भितर बर्तमान क्रिएट होती 30 डिग्री। जब आम विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल आम देखा ये एंगल के 15 डिग्री हम। बस बर्तमान यदि पचारि ये जो सेकेंड चार्ज बॉब ये पार्टिकलटा इक्विलिब्रियम अच्छी ना नहीं, ऑब्वियसली दिस इज एन इक्विलिब्रियम, यहाँ आम इक्विलिब्रियम अच्छी कारण भितर सेपरेशन होती अप टू के एंगल भितर के फॉर्मेशन होती 30 डिग्री जाए। तापर से जन जन को रिपेल कर रिपेल कर 0 डिग्री एंगल कर 30 डिग्री। यस से बर्तमान इक्विलिब्रियम रहा देख फोर्स ऑफ रिपल्सन पड़ला टुवर्ड्स राइट साइड, तार वेट पड़ला mg। अच्छा टेंशन पड़ला के टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग। बस ये तुम जाने ये टेंशन टी को आम 2टा कंपोनेंट स्प्लिट करा बाध्य किसी गोटे कनक्लूजन पाइबा। दिस इज वन कंपोनेंट, दिस इज अनदर कंपोनेंट। पुणी से सेम ट्रिक कहि को फॉर्मेट जेड फॉर्मेट नहीं कि। सो जेड फॉर्मेट देखा देख देख जेड फॉर्मेट। सो एंगल दुटा इक्वल हम। सो के एंगल एटा 15 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज टी cos 15 and this will be t sin 15. So from the left side figure आम कन्फ्यूजन कौन पाइले t sin 15 टा केते f, t sin 15 इज इक्वल टू f। बढ़िया से बुझ। एंड t cos 15 केते t cos 15 दैट इज इक्वल्स टू mg। बर्तमान आम यदि टा को डिवाइड करवा इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 आम करदे टी टी कैंसिल कले के tan 15 इज इक्वल्स टू tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच f बाय mg। tan 15 डिग्री दैट इज f बाय mg। ओके ये स्टॉप करिया हमर कोन लेफ्ट साइड रो एक्टिविटी हम जहाँ करबार थिला हम कर देले बुझिला नहीं। बर्तमान देखिए प्रॉब्लम कौन हो देख केमती आंसरटा बाहर। देन ताको लिक्विड जो एंटर कर देला हमें देख वेट एठी पड़ला भी mg ठीक अच्छे वेट mg पड़ला दैट इज ट्रू। आउ कौन जन जन को रिपेल कर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज ऑल्सो ट्रू। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज एफ लिखिद आम सिंपली जन जन को रिपेल करेंगे। अच्छा ये एफटा कौन पूर्व एफ सहित इक्वल हम के नुह क्या मीडियम आसीगला 2टा चार्ज पार्टिकल भितर देख फोर्स वैल्यू चेंज हो लेट इट बी एफ डैश यहाँ पाठ एफ डैश। अच्छा लिक्विड जो एंटर कर लिक्विड प्रॉपर्टी कौन बाइंड फोर्स एक्सर्ट कर बाइंड फोर्स कौन एक्सर्ट हम ऊपर को देख बाइंड फोर्स दिस इज बाइंड फोर्स बी लिखि दूसरी बाइंड फोर्स। बर्तमान टेंशन कौड़े पड़ू देख टेंशन टी एलोंग द स्ट्रिंग पड़ला ये टी टाक आम 2टा कंपोनेंट अगेन स्प्लिट करवा जदि करवा आम कौन कौन मिल देख यहाँ गोटे कंपोनेंट दिस इज अनदर कंपोनेंट सेम एज द प्रीवियस। सो दिस कंपोनेंट विल बी टी sin 15 डिग्री कारण ये विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल लगे 15 डिग्री एंड दिस एंगल इज 15। सो तार गोटे कंपोनेंट कौन आसो दैट इज टी cos 15 डिग्री। यस बर्तमान देख इक्वेशन कौन आसला जदि मुझे चार्ज पार्टिकल कथा देखी यहाँ चार्ज पार्टिकल चार्ज बॉब ये पड़ू तुम फोर्स एफ डैश है तौक पड़े आमर mg उपरको आमर कौन है उपरको आमर है टी cos 15 अगेन अपवर्ड डायरेक्शन किए अच्छी बाइंड फोर्स एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड किए पड़ला टी sin 15। लिक्विड भितर बर्तमान एत सब फोर्स एक्ट है चार्ज बॉबटा कौन अच्छी इक्विलिब्रियम अच्छी। बर्तमान इक्वेशन कौन आसो टी sin 15 दैट इज इक्वल टू एफ डैश एंड आउ गोटे इक्वेशन टी cos 15 प्लस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg दैट मीन्स टी cos 15 विल बी mg माइनस बाइंड फोर्स ये इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन आम दबा इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। बर्तमान कौन करवा इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 4 करवा कौन हम टी sin 15 डिवाइडेड बाय टी cos 15 दैट इज इक्वल टू एफ डैश डिवाइडेड बाय mg माइनस पी। तो पाइले हमें tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ डैश डिवाइडेड बाय mg माइनस पी। यस बस देखो ये पाइजे tan 15 इक्वल टू mg एफ बाय mg दिस इज स्टार ओके दिस इज डबल स्टार क्लियर दिस इज सपोज माई डबल स्टार।
So comparing star and double star equation, comparing star and double star equation केते हम पाइला LHS इक्वल आछन RHS इक्वल आसीबो F by mg is equals to बढ़िया से बुझो F by mg is equals to F dash by mg minus p बर्तन वैल्यू हमें देखिबा ओके देन हम देखिबा F by F dash और F dash by F कोन तुम कहू को मन पकाओ हम पचारथिल तुमको हम पढिथिले F dash by F equal to k और F by F dash equal to k तापर जाई तुम पाठटा भलसे मन पके परिबो F medium F dash means F medium हम फार्मूला कोन थिला F medium is equals to F naught by k ओके रिड्यूस हो जातला ना फोर्सटा ता नंबर कोन पाइले इक्वेशन F naught by F medium is equals to k क्लियर F naught by F medium equals to k एक्जेक्टली एठी हम करिया कोन F dash by sorry F by F dash equals to mg divided by mg minus p सो बर्तन पॉइंट ऑफ व्यू रे एमदी कॉलम टी प्रॉब्लम हवा हमको देखो केमती सॉल्व करूँ F dash by F कैलकुलेट करेंगे F dash by F is equals to mg minus b divided by mg कौन पे एमदी मु कली बिकॉज एटा को लिखि परिबी मु mg by mg minus b by mg that means 1 minus buoyant force by mg एठी बर्तमान तुम बहादुरी देखियो फार्मूला केते मन रखिछ पाठ प्रीवियस क्लास पाठ सो buoyant force रो फार्मूला कोन 1 minus buoyant force ला v रो g ओके वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट माने ठीक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ओके इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिबा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर into density of liquid into g divided by a mass टाइम लिखी कौन density equal to mass by volume so mass is equals to density into volume that means volume of sphere into density of sphere एटा ही बहादुरी into g देखो g वैल्यू कैंसिल आउट होला g बर्तमान तुम कैलकुलेशन करिवो 1 माइनस बस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी कैंसिल होउची 1 माइनस केते बारला रो लिक्विड बाय रो स्फीयर so 1 minus density of liquid के 0.8 density of sphere 1.6 that means 1 minus 8 by 16 1 minus 1 by 2 1 by 2 बढ़िया से बुझो ताने कहार आंसर मिलला हमको F dash by F is equals to 1 by 2 that means F by F dash is how much 2 and F by F dash कौन and F air by F medium that is your dielectric constant that is 2 yes this is the करेक्ट आंसर देखो आम जीटा क्वेश्चन सॉल्व कले सब तो क्वेश्चन जन जन को डिफर कर लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट थिला ओके सो मु रिकॉल कर दूँ तुमको बायंट फोर्स फॉर्मूला कौन कहली बायंट फोर्स एफ बी इज इक्वल्स टू भी रो जी यहाँ केमती मन रख वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ immersed portion of object into density of liquid into acceleration due to gravity obviously आ गोटे फॉर्मूला हमर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम त माने डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी एदिक तो सो मास ऑफ बॉडी केते बताले डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी एई कंडीशन को हम अप्लाई करछे बुझीगला ये टोटाल क्वेश्चन ये कौन एमती आम सल्व करा दरकार सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 देखो आज सेशन में आम केतटा क्वेश्चन 13टा क्वेश्चन कले इफ पॉसिबल आमर पेंडिंग रही कौन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा यदि पॉसिबल हुए मुझे नेक्स्ट आ गोटे वीडियो तैयारी करी किसी अलग डिफरेंट क्वेश्चन आनिकी ओके जदि पॉसिबल है अदरवाइज आम नेक्स्ट लेक्चर रे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा तार न्यूमेरिकल करवा चेष्टा कर आई होप टू डू द न्यूमेरिकल अगेन यस सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास तो सांग मान सहित शेयर कर दिए वीडियो सब क्वेश्चन सब आक्वेंटेड हूँ भल भल क्वेश्चन आज कराला तुम भी नोट कलापर तुम जो रिकल कर जापर सब क्वेश्चन जन जन को डिफर करुँच ये सर नो ओके सो सांग मान शेयर कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे।